Sushil Kwarshaman, pass out from IIT Roorkee. I have cleared 3 times engineering services, 18, 19, and again I am going for the interview of 2020. Now, communication system is your very important part, and इस टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है आपका रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस. सो नथिंग बट रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस, ये सारे पोर्शंस को हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे. सो व्हाट्स द random variable and random process? Everything is random, right? Everything is random. जो भी है आपके वो क्या है, आपके random है, randomly generated signals है, right? So in all communications process, the all outcomes are nothing but your random outcomes. So outcomes is nothing but your random outcomes, right? Let's say tossing of the coin. So whenever you toss the coin, this is nothing but tossing of the coin is nothing but randomly outputs, and the output may be, output आपका क्या हो सकता है? So output may be your either head or either tail. So output is not fixed. Output may be either head or either tail. So tossing of the coin is nothing but randomly outputs, which is nothing but head and your tail. Same as it is. Tossing of the dice, rolling of the dice, right? डाइस को अगर आप रोल करते हैं, जस्ट 1 मिनट, अगर आप डाइस को भी रोल करते हैं, है ना, तो डाइस को भी अगर आप रोल करोगे तो उस केसेस में भी आपका क्या होगा, देखिए क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं. सो आउटकम मे बी 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. सो द आउटकम्स मे बी 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, राइट? सो दीज आर द आउटकम्स, दीज आर द आउटकम्स. ये सारे आपके क्या है, आउटकम्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम निकालते हैं, राइट? So in this communication system, random variable and random process. So what do you mean by random variable and what do you mean by random process? The random variable with respect to time is called random process. Random variable को अगर हम टाइम एक्सिस के फ्रेम में किया जाए, then this is called random process, right? So first of all, here what is the probability theory? So the probability theory is what says, and what is your sample space and what's the outcomes, right? So the sample space is nothing but, जब भी हम sample space की बात कर रहे हैं, sample space it means this is your space, let's say this is your space having the x. So whatever the possible outcomes may be, so let's say the possible outcomes may be your x1, let's say another possible outcomes is your x2, let's say another possible outcomes is your x3, so dot dot, let's say another possible outcomes is your xn, right? So these are the possible outcomes, these are the possible outcomes. But for this sample space, which is nothing but x, so x is whatever your possible outcome, and the graph of these possible outcomes, whatever your possible outcomes, if you want to draw this possible outcomes graph, and this is called PDF, probability density function, that is called PDF, probability density function, right? So whatever your possible outcomes, whatever your possible outcomes, and these possible outcomes are derived, and this is nothing but called probability density function. Now in this function, what are the PDF and what is your CDF, this is the major importance, right? So importance of this topic is PDF and CDF, and how we can find the probability, and how we can design the PDF and the graph of the CDF. So the PDF is nothing but called probability density function, and CDF is called cumulative distributive function. So PDF, this is called probability density function,
it is represented as f of x x. So in this case, x is called sample space. This is your sample space, and this x is your outcomes. This x is your outcomes, right? So the PDF can be represented in the form of f of x, and this is x is called sample space, and this x is called outcomes. Now, how we can relate the PDF with the CDF? CDF, this is called cumulative distributive function. Distributive function. So this is can be represented as f of x x, capital F of x, where x is called sample space, right? This small x is called outcomes. This small x is called outcomes, right? So this is your outcomes and this is your sample space. Now, throughout this PDF and CDF, ये PDF और CDF की अगर हम बात करें, then for this PDF and CDF, किसी भी डिस्क्रीट या किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए हम पीडीएफ को निकाल सकते हैं, या पीडीएफ अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है तो उससे हम आप अनदर फंक्शंस को भी क्रिएट कर सकते हैं. सो द प्रोबेबिलिटी, सीडीएफ इज नथिंग बट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. CDF gives the probability, not gives the PDF. CDF gives probability. And PDF, sir, area of PDF gives probability. Now, what's the difference between this probability and PDF functions? So PDF, probability density function, it means probability per unit area, right? So अगर area से आप इसको multiply कर दें, if you multiply with the area, so take the common, this is nothing but integration, and you will get the output, this is nothing but your probability. So the sample space f of x, and where x is the outcomes, possible outcomes, and x is your sample space. This is called sample space. So the minus infinity to infinity f of x into dx, this is called PDF, and this should be equal to 1. This should be equal to 1, right? So PDF, and this is nothing but your probability density function. So PDF will represent the probability density function, and this function is nothing but your area. Area of PDF is called CDF, and CDF gives you probability. CDF क्या देता है आपका सर? Probability देता है. Now come to the point. Now, so this is your random variable and random process. So the word random means unpredictable. The random means unpredictable things, right? So जब भी हम random की बात कर रहे हैं, random it means unpredictable things, that's called random. इसी को बोलेंगे हम random variable and random process. So if receiver end की बात जब भी हम करते हैं, जब भी ट्रांसमिट हो रहा है आपका, रिसीवर को कभी भी पता नहीं होता है. रिसीवर डोंट नो, रिसीवर को कुछ भी पता नहीं होता है कि ये कौन सा वैल्यू कहां पर आपके जा रहे हैं, बाइनरी 1 है या बाइनरी 0 है, उनको कुछ भी पता नहीं होता है. तो जब भी हम मैसेज सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर रैंडमली जनरेटेड मैसेज सिग्नल्स. दैट मैसेज सिग्नल्स इज नथिंग बट योर रैंडमली जनरेटेड मैसेज सिग्नल्स, राइट? तो मैसेज सिग्नल्स आपका रैंडमली जनरेटेड है, अब उस रैंडमली जनरेटेड मैसेज सिग्नल्स के सैंपल्स के आउटकम्स को निकालना है. ठीक है, तो चलो मान लिया A इज योर प्रोबेबिलिटी एंड हैविंग द, इसका जो आपका सबसेट है वो कितना है? B का सबसेट है कितना आपका? A. सो यहां से हम देखते हैं आपको, यहाँ पर ये बोल रहा है आपका अलजेब्रा ऑफ द इवेंट्स, एंड दिस इज नथिंग बट योर
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोट ए इवेंट कंटेनिंग द सैंपल एज अ पार्ट ऑफ, मतलब क्या, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी ए है तो पी ए की बार की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी ए हो जाएगी, है ना। अगर दो सैंपल स्पेस एक साथ ऑकर्स हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ए यूनियन बी। अगर दोनों का हम इवेंट, दोनों का इंटरसेक्शन इवेंट्स की बात करें अगर हम, then this is nothing but A intersection B, this is called intersection events of A and B, है ना। अगर कोई भी सैंपल स्पेस कोई भी पॉइंट को अगर नहीं रख रहा है, इफ द इवेंट कंटेनिंग नो सैंपल पॉइंट, दिस कॉल्ड नल इवेंट, दैट इज कॉल्ड नल इवेंट। If two events A and B are mutually exclusive, what do you mean mutually exclusive? Both are different. Mutually exclusive, it means both are different. Both are different. And it can say both are independent. So two events A and B are called mutually exclusive or disjoint if they contain no common sample point, that is A intersection B is equal to what, 5, right? So this is nothing but your function जिसके हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आता है सर प्रोबेबिलिटी इवेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन व्हाट वे वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। सो एज यू नो दैट द एनी प्रोबेबिलिटी, and that is nothing but the probability should be greater than equal to 0 and the sample space having the maximum value is 1, because as you know that the maximum value of the probability is equal to what, 1, and this is your formula of A union B. As you know that the A union B is nothing but PA plus PB minus PA intersection B, right? So if PA intersection B दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी A अलग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अलग है, there is no any common points between A and B, that is there is no any common points in the probability A and B. In that case the probability of A intersection B is nothing but your 5. So A union B is equal to what, this is PA plus PB, A union B is equal to what, PA plus PB. So this is nothing but one mutually exclusive events, and this is called mutually independent events, right? Chali. So this is the basic funda, and this is your probability. PA bar equal to what, 1 minus PA, P5 equal to 0. If A is less than B, it means PA is less than PB. If PA less than 1, right? This is the formula. Now conditional probability. What is the conditional probability? So in the random variable, the conditional probability is very, very important part. Let's say this is PA by B. It means what? What should be the probability of A? What should be the probability of getting A if B is already transferred, right? Yeah, you can say that A की probability क्या होगी? A की probability क्या होगी? What is the getting of the probability A if your B events is already occurs? B events is already occurs, है ना। जैसे बारिश हुई, चलो बारिश हो गई, बारिश में भीगने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, बारिश में भीगने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, मतलब ऑलरेडी बारिश हो चुकी है। सो कोई भी इवेंट्स अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है, कोई भी इवेंट्स पहले से ही ऑकर्स हो चुके हैं, देन आफ्टर द ऑकरिंग whatever the next events, probability of getting next event, that is nothing but called conditional probability. That is the case of your conditional probability. So the PA by B is can be right here. This is PA by B. ध्यान रखें इसको लिखने का तरीका, इसको मल्टीप्लाई करना है PB को, तो ये क्या हो सकता है, PA intersection B upon PB. Now if A and B is independent, अगर A and B आपके क्या है सर, इंडिपेंडेंट है, देन व्हाट, PA इंटरसेक्शन B अलग अलग हो जाएंगे, PA इंटू कितना, PB. In that case the PA by B is equal to what, PA. It means what, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो B के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो B का प्रोबेबिलिटी ऑकर्स हो रहा है उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा A की प्रोबेबिलिटी होने पर। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप इधर से जो है, आप बारिश हो रही है और तो बारिश हो रही है तो बारिश में भीगने की प्रोबेबिलिटी उससे लिंक है,
या बारिश के कारण जो डिजास्टर है उसकी प्रोबेबिलिटी होने के लिंक है, लेकिन बारिश हो रही है उसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसकी कोई लिंक नहीं है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये बताता है आपका कि किसी भी ऑलरेडी इवेंट्स जो हो चुके हैं आपके, वट एवर योर इवेंट्स ऑलरेडी हैव डन, and that probability depends the next occurring events, and this is called conditional probability. It means it depends on that condition, किस पे डिपेंड करेगा, उस कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ कम टू द पॉइंट, पी बी बाय ए। सो पी बी बाय ए मतलब PB by A, this can be right here, PA intersection B upon PA. Why this is called? Because this is nothing but, again this is independent, then PB by A becomes PB, है ना, क्या बन जाएगा आपका सर, PB. So this is called conditional probability, that is called conditional probability. Now this is your events. Now come to the random variables. So in the random variables there are different types of the variables. One is called continuous variable, another is called discrete variable. So what do you mean by continuous variable and what do you mean by discrete variable? Continuous variable क्या है and discrete variable क्या है, इन मुद्दों पे आप चर्चा करेंगे। Continuous, a function is said to be continuous if it is graph always said to be continuous between your two time domains. Let's say the f of x having the continuous function. So if it is continuous function, so this is nothing but graph is always continuous. There is no any discrete points. It means कहीं भी break नहीं होगा graph आपका, right? So each and every events के लिए possible outcomes अगर है, then the combined possible outcomes is called continuous random variables. And discrete random variables. Discrete random variables is nothing but the random variables having no any continuous forms. Now you can see here for the discrete random variables, each and every functions पे अलग-अलग functions पे अलग-अलग पॉइंट को रिलेट करने के लिए यहां पर हम लोग लेके चलते हैं कौन सा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। क्या लेके चलते हैं, discrete random variables. So this is nothing but your discrete random variables, right? Now come to the point. यहां पर जो है हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, कौन सा पॉइंट को लेकर के नहीं चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपका है सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जैसे टॉसिंग ऑफ द कॉइन। ध्यान से समझिएगा, टॉसिंग ऑफ द कॉइन, अब कॉइन को आपने टॉस किया तो डिस्क्रीट आउटपुट शो किया, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ, या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी या तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, राइट। अगर आप रोलिंग ऑफ द डाइस कर रहे हैं, इफ यू रोल एनी डाइस देन पॉसिबल आउटपुट में बी 1 2 3 4 and 5 6. So these are the possible outcomes. If you want to calculate the probability of finding 1, then this is nothing but 1 by 6. If you want to calculate the probability of finding 2, then this is nothing but 2 by 6. If you want to calculate this is again 1 by 6. If you want to calculate the probability of finding 3, and this is nothing but again 1 by 6. So each and every possible outcomes having in the discrete form, and that is called discrete random variables. So if your possible outcomes, which is nothing but independent from the other possible outcomes, this is called discrete random variables. And in that case, at a fixed time अलग अलग आपका जो है possible outcomes possible है, and that called discrete random variables. That is called discrete random variables. Now come to the point. What is your continuous random variable? Continuous, it means what? Continuous functions. Let's say this is triangle function. If it is 0, let's say this is 2, let's say this is 8. This is f of x. It means any events which possible outcomes which is nothing but in the form of triangle function. हम यहाँ पर बोल सकते हैं
वो किसके फॉर्म में आपका है, ट्रायंगल फंक्शंस के फॉर्म में। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पीडीएफ एंड सीडीएफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पीडीएफ, क्या बोलेंगे इसको सर हम, पीडीएफ। नाउ कम टू द पॉइंट। So the distribution function is nothing but cumulative distribution function, and x is a function defined by f of x equal to px of x. So this is called CDF. This is called CDF. But what do you mean by PDF? PDF is nothing but probability density function, right? Now these random variables are having the different types of random variables. बहुत सारे टाइप के random variables हो सकते हैं। अब ये रैंडम वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं सर, तो रैंडम वेरिएबल देख लिया कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। अब ये कॉन्टिन्यूअस क्या हो सकते हैं सर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जो है क्या क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, बायनोमियल हो सकता है ना। यहाँ पर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन ले सकते हैं। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस which is used for the calculation of the probability. So the any events which occurs for a certain time periods, or we can say any events which is continuous, which gives the continuous outputs, is frames under your continuous random variables, or any events which is not continuous, which provides not continuous output, which is framed under your discrete random variables. So this is your continuous and this is your discrete random variables. This is the very very important part. Now come to the point. The PDF should be what? PDF आपका कैसा होना चाहिए? So let's say this is your PDF. So your PDF should be always positive. Let's say क्या सर नेगेटिव हो सकता है? Yes, नेगेटिव भी हो सकता है PDF, बट जब भी हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, देन फॉर द एक्चुअल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस शुड बी पॉजिटिव, बट योर पीडीएफ में बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x and it may be from minus infinity to plus infinity. That's why, as you know that the maximum probability is what? Maximum probability is 1. So let's say the probability, so probability का minimum value कितना हो सकता है, so the minimum value should be equal to 0 and the maximum value should be equal to 1. This is called probability. That is called probability. Now this is continuous random variable. That's why the properties of the PDF is, अगर हम PDF की property की बात करें तो this is minus infinity to plus infinity f of x into dx. This should be equal to 1. Why? Because the area is equal to 1. Why? Because area equal to 1, because the maximum value of the probability is equal to 1, right? So for any continuous random variable, it should be varied from minus infinite to plus infinite. Their area should be equal to 1. Area क्या होना चाहिए सर आपका, 1 होना चाहिए. Now come to the point of CDF. So what represent this CDF? CDF क्या represent करेगा आपका, है ना? And what is the function of this CDF? So CDF is what? CDF can be represented at f of x, and this is equal to minus infinity to infinity f of x into dx, right? So this is f of x into dx, and maximum value of the CDF is equal to what? 1. So when maximum probability is equal to 1, so CDF gives the probability, not the PDF. ध्यान रखेंगे, CDF आपका probability देगा, but the area of PDF, this gives the CDF, and the CDF gives the probability. This is the basic funda. Area of PDF is called CDF, and your CDF gives the probability, not the PDF. Area of PDF, yes, area of PDF gives the probability. Now, so first property of the CDF is, this is nothing but the maximum value of the CDF should be equal to 1 and the minimum value of the CDF should be equal to 0, because the maximum probability is equal to 1 and the minimum probability equal to 0.
So this is the first property of your CDF. Now come to the second point. If you any PDF and CDF point of view, let's say any distribution functions, right? Let's say any types of distribution function. सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है वो कैसे लिखते हैं. लेट्स से फर्स्ट केस फर्स्ट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन. लेट्स से दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन. ठीक है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की बात कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज योर एक्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन. This is your a to b f of x. So here in this case, whatever the probability at x equal to a, whatever the probability at x equal to b, and it is same the probability when x is varied from a to b. So each and every point having the same probability, that's why this is called यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन. इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन. नाउ फॉर दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सो हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k? जस्ट इंटीग्रेट. सो a to b, the k into dx should be equal to what? 1, because the maximum probability is equal to 1. And the area of the PDF is called CDF, and CDF gives the probability. So this is k into b minus a equal to 1. So the k is nothing but 1 upon b minus a. So this is called uniformly distributed function. इसी को क्या बोलते हैं हम? Uniformly distributed function बोलते हैं. That is called uniformly distributed function. So this is your distribution of your function, right? Now come to the point. अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसका CDF ड्रॉ कीजिए, in what way we can draw the CDF? So its CDF is f of x. This is from minus infinity to x, f of x into dx, right? And it becomes your CDF in terms of your x. So this is called CDF. Now come to the point. चलिए, अब यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. मान लिया एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा, आगे पढ़ाएंगे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे होता है. मान लिया ये पॉइंट्स आपका x1 है, ये पॉइंट्स मैंने मान लिया x2 है. अगर आप इसके एरिया कैलकुलेट करें, दिस इज x1, एंड अगर ये एरिया कैलकुलेट करें, दिस इज नथिंग बट f of x x2, and this will gives you f of x x1. Right? Now in this case, if x1 is less than x2, अगर x1 आपका छोटा है x2 से, तो एरिया भी इसका क्या होगा, छोटा होगा. और जब एरिया भी छोटा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, आपकी छोटी होगी. So this is your first property and this is your second probability. Now at x equal to infinity, x equal to infinity, what is the maximum value of probability? This is equal to 1. When x equal to minus infinite, it is equal to 0. So this is nothing but your probability is equal to 0. So in this case, f of x, it will be varied from 0 to 1. It will be varied from 0 to 1. ये कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में आपका क्या होगा सर, वेरी करना स्टार्ट करेगा. And this is nothing but your CDF. इसी को बोलेंगे हम CDF. Now same as it is, if your discrete random variable, then this is called probability mass function. अगर कोई discrete random variable है, उसको बोलेंगे हम क्या, probability of mass function. जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि एक कॉइन को टॉस किए, 1 बार आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी, 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी, 4 बार आने की प्रोबेबिलिटी. मान लो आपका प्रोबेबिलिटी एड अप होता चला जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी अगर 0 से स्टार्ट हुआ है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा. So, इसलिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को जब भी हम डिनोट करते हैं, उसके जो CDF पॉइंट को, दिस इज द CDF. So the CDF is nothing but this is your CDF, this is your CDF. So maximum CDF equal to 1, and it may be your start from half or 0. So this is called probability mass function. Now
Here I have already discussed the property of PDF functions. So this is nothing but the probability density function and its property for the continuous random variables. So first property is what? The f of x should be positive. PDF should be positive. PDF की value negative possible नहीं है. Yes, x is your always positive. In this case, y is your positive. F of x should be positive. In this case, x may be negative. It may be negative. But f of x is always positive. ऐसा कभी PDF आपको नहीं दिखाई देगा ये -1 ले लिए. It is not possible, right? ऑलवेज आपको जो भी दिखाई देंगे पॉजिटिव के फॉर्म में दिखाई देगा. जो भी होगा वेव फॉर्म्स आपके पॉजिटिव होंगे, राइट? चलिए, हाँ, एक्स हो सकता है, एक्स डोमेन नेगेटिव हो सकता है, एक्स हो सकता है, बट एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट के बीच में जो एरिया है दैट इज माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1. किसके इक्वल है सर? आपका 1 के इक्वल है. अगला प्रॉपर्टी बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज ए पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर? आपका पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा आपका, राइट? सो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. दिस इज कॉल्ड पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट? नाउ अगर ए बी से बड़ा है, अगर आपका ए आपका बी से बड़ा है, whenever your a is less than b, so whenever your a is less than b, in that case, इस केस के लिए हम प्रोबेबिलिटी जो लेंगे हम कहां से लेंगे सर? a to b f of x into dx. This should be condition, right? Now come to the point, sir. How you can find the probability and how you can find the probability density functions? इसे हम कैसे निकालेंगे probability को, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. CDF को कैसे निकालेंगे, PDF से आप CDF को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सारे मुद्दों पे अभी हम चर्चा करेंगे, राइट? अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका दिया हुआ PDF जो कैसा है सर? आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है. अगर आपसे पूछ दिया जाए, इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू, लेट्स से दिस अनदर क्वेश्चन, राइट? ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. मान लिया ये आपका -1 है और ये मैंने मान लिया 3 है. So this is, let's say, k, and let's say this is x and this is f of x, right? Now we have to calculate the probability. मुझे निकालना है क्या? probability. सर probability कौन देता है? PDF और CDF? सर probability CDF देता है, not the PDF, right? Area of PDF is called CDF and CDF gives the probability. एक लाइन में फिर से लिख देता हूं आपको, area of PDF is called CDF and your CDF gives probability. This gives your probability. ये आपका probability देता है. अब ध्यान से देखिएगा, here your x is varied from what? -1 to 3. So first of all you should calculate the value of k. So in what way we can calculate the value of k? For the calculation of the value of k, this should be equal to, from -1 to 3, the k into dx, and this is equal to k into 4, and this is should be equal to 1. So here k is equal to 1 by 4. So here the value of the k is nothing but 1 by 4. k का वैल्यू कितना हो गया आपका? 1 by 4. So this is the value of the k. Now अब निकालना है मुझे प्रोबेबिलिटी. सो एरिया PDF इज कॉल्ड CDF. इसका एरिया निकालना पड़ेगा. जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिया जाए, बताइए f of x अगर आपका 1 से छोटा है, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हिच आउटकम्स इज x less than equal to 1, and this is nothing but the area which begins from -1
But when asked, this is not the equality sign. This should be not equality sign, right? Less than x equal to 1. If you ask what is the probability at x equal to 1, अगर आपको x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, x इक्वल टू 1 पे, मतलब x इक्वल टू 1 पे कैसा फंक्शन बन जाएगा? डिस्क्रीट फंक्शन बन जाएगा सर। x इक्वल टू 1 पे एकदम प्रेजेंट x इक्वल टू 1, मतलब प्रेजेंट x इक्वल टू 1 पे कैसा फंक्शन बन जाएगा? डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट का एरिया अगर आप निकालें तो कितना? 0। सो कभी भी अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ध्यान से समझिए, अगर कोई आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी आपको निकालना हो, तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट और कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इक्वल टू 0. सो दिस x इक्वल टू 1 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? 0. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? आपकी 0 हो जाएगी, राइट? सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी. बट अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 के बाद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो इन व्हाट वे वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे इसको देखते हैं हम, राइट? सो इन व्हाट वे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे सर? प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए क्या कीजिए आप? x ग्रेटर देन 2 कर दीजिए. सो x ग्रेटर देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको. सो व्हेन x ग्रेटर देन 2, इट इज नथिंग बट दिस इज योर -1 2 3. सो 2 से बड़ा, दिस इज एरिया, 2 से बड़ा 1/4 था ये 2 से बड़ा ये एरिया निकाल दीजिए आप. दिस एरिया इज नथिंग बट 1 into 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/4. या तो ऐसा निकाल सकते हो आप 2 to 3 1/4 into dx and this is equal to 1/4. So in that case your probability is 1/4. So this is the way to calculate the probability in this case of continuous random variable. Continuous random variable के केस में इस तरह से आप probability को निकाल सकते हैं. Now come to the other point. Next. Sir, are you getting my point? That's good. Now, normal distribution function. And this is also called Gaussian distribution function. This is also called Gaussian distribution function. चलिए, मान लिया this is your normal distribution function, right? ये होता है आपका normal distribution. This is called mean value. Mean value. Let's say this point is x1. Let's say this point is x2. This is your x. This is your f of x. So the PDF of normal distribution function is nothing but f of x equal to 1 upon, this can be right here, f of x equal to 1 upon under root 2 pi sigma square e raised to power x minus eta x का whole square upon 2 sigma square. Let's say this is eta x, mean value, right? Where eta x, mean value, sigma square is called variance, right? Sigma square is called variance. Now come to the point. At x equal to eta x, when we put here
x equal to eta x. Now what's the value of f of x? This f of x equal to 1 upon under root 2 pi into sigma square. This is your f of x. So this value is 1 upon under root 2 pi into sigma square. कितना वैल्यू आ जाएगा सर इसका? 1 upon under root 2 pi sigma square. Now this sigma, this is nothing but called variance, and the standard deviation is nothing but sigma, right? चलिए, so what do you mean by a standard deviation and what do you mean by the variance? A standard deviation क्या है, variance क्या है, इसके बारे में देखिए. मीन वैल्यू से ये आपका मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से कितना फ्लक्चुएट कर रहा है आउटपुट्स, दिस इज आउटकम्स. सो मीन वैल्यू से आउटकम्स कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट योर कॉल्ड वेरिएंस, एंड दैट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट deviations from your mean value, and the square of this standard deviation, this is called variance, and this is nothing but your variance. Now come to the point, how we can find the area and how we can find the probability in the case of normal distribution function. अब देखिए सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एरिया निकालना बहुत टफ है, क्योंकि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया निकालने के लिए बैठोगे, देन यू शुड इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, राइट, या ये एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी, जैसे ये एरिया चाहिए a1, सो a1 इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी टू ये पॉइंट मान लो, मैंने x1 मान लिया, x1 f of x इंटू क्या लिखोगे सर आप, dx. अब ध्यान से देखो, f of x ऑलरेडी आपके कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर कितना है सर, x माइनस ईटा x का होल स्क्वायर अपॉन कितना है 2 सिग्मा स्क्वायर. अब इस वैल्यू को जब आप रखेंगे, इनटू कितना करेंगे आप, dx से इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल गेट द आउटपुट a1. क्या हो जाएगा सर आपका a1. अगर आपने a2 निकालना है, then how we can find the a2? Similar way, just it integrate to what, x to infinity. Now it is integrate from x2 to infinite 1 upon under root 2 pi sigma square e raised to power minus x minus eta x का whole square upon 2 sigma square into what, into dx. So this is the area. अब आता है सर इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ पड़ेगा. यस पड़ेगा सर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर स्क्वायर है. जस्ट 1 मिनट. चलिए, तो आप सबको क्या पढ़ा रहा था मैं, यहाँ पर देख रहे थे कि आपका एरिया निकालेंगे कैसे, है ना. देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का एरिया निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है. अगर आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए आपको यहाँ पर एक क्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर x माइनस ईटा x का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इनटू dx. इसका मैक्सिमम कितनी होगी, 1. अगर इसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं कहाँ,
माइनस इंफिनिटी पे, ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, पीडीएफ की मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, प्लस इंफिनिटी पे पूछा जाए तो कितना होगी 1 होगी। So this is nothing but PDF. Now, if you want to draw CDF, then CDF is what? Starts from 0 and at infinity पे कितना हो जाएगा 1. So this is nothing but 1 for the case of normal distribution function. कभी कभी आपका यहाँ से भी स्टार्ट करेगा, है ना, ऐसा भी, ये शिफ्टेड वर्जन है, ऐसा भी ले सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये शो कर रहा है आपका, ये कितना हाफ प्रोबेबिलिटी, ये 0 से स्टार्ट किया और ये हो गया आपका 1. दिस इज योर एफ ऑफ एक्स. सो दिस इज नथिंग बट योर CDF. क्या है सर आपका ये CDF है. सो PDF एंड CDF दोनों केसेस के लिए हम देख लिए. अब देखो ध्यान से, एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया मेन फंडा निकालने का. मान लो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, दिस इज x आउटकम्स, नाउ दिस इज योर f of x. so first of all, let's say this is minus infinity to infinity f of x into dx. This is your f of x and this gives your probability. This gives your probability. Now come to the point. This is f of x equal to minus infinity to infinity 1 upon under root 2 pi sigma square e raised to power minus x minus eta x का whole square upon 2 sigma square into dx. Now put here, put z equal to x minus eta x upon sigma. So whenever you put here x equal to z equal to x minus eta x upon sigma, so what's the dz? This is dx upon sigma, right? So what will become here, f of x equal to, this is 1 upon under root 2 sigma square, under root 2 pi sigma square. This is from minus infinity to infinity e raised to power minus z square by 2 into dx is sigma into dz. Now sigma to sigma cancel out. Now your f of x becomes 1 upon under root 2 pi. This is minus infinity to infinity e raised to power minus z square upon dz. And this area is called q function of z. This is called q function of z, right? So whenever you want to solve the probability, you have to already given the q function of x. आपको q function of x given रहेगा, right? तो q of z की वैल्यू आपको गिवन रहेगी और अगर q of z की वैल्यू को अगर आप जैसे ही पुट करते हैं, you will get the outputs and यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं, राइट? तो आगे की एरिया q of z जब भी लेते हैं हम कहाँ के लिए एरिया लेते हैं, आगे की एरिया को लेकर के चलते हैं. So the q of z is nothing but 1 upon under root 2 pi. This is z to infinity e raised to power minus z square by 2 into dz. आगे की एरिया को हम हमेशा लेंगे कौन सा, q of z के फंक्शन. किस केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के केस में. ये मैंने मान लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. नाउ लेट्स से दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. फॉर दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इरेजर वर्क नहीं कर रहा है, इसको आप मान लिया ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है. अब आपको पूछ दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू x1, नॉट इक्वल टू साइन. इफ यू आर गिवन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x1, ये निकालना मुझे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you should find the value of your z. So z is nothing but x minus eta x upon sigma x.
So first of all put here x1, so you will get z equal to x1 minus eta x अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन कितना है सर आपका सिग्मा एक्स, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस ईटा एक्स अपॉन कितना सिग्मा एक्स। अब ये आपका आ गया z, दिस इज नथिंग बट योर z। अब ये एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे, तो ऑलरेडी पूछ रहा है x ग्रेटर देन x1 के लिए, तो आपको पता है जो एरिया ऑफ द पीडीएफ है वही कहता है आपका सीडीएफ, और सीडीएफ ही क्या देता है आपका, and the CDF is gives your probability. Now come to the point. This is your CDF. This area gives the CDF. अब इस एरिया को आपको निकालना है, then this is nothing but Q of Z. क्या होगा ये आपका Q of Z, और Q of Z की वैल्यू सर आपको गिवन रहेगी, है ना। एग्जाम हॉल में आपको Q of Z की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन x1, so the probability at x less than x1 can be right here minus infinity to x1 f of x into dx. This is your area. Now if you want to calculate in terms of the z, then this is nothing but Q of z. So this function is 1 minus Q of z. Why this? Because the total probability is what? 1. टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 1 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ साइड दिस इज 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ साइड दिस इज इक्वल टू 0.5. सो दिस एरिया is nothing but 1 minus Q of z. So this is the way to calculate. क्या कैलकुलेट करेंगे सर हम, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द सीडीएफ। सीडीएफ निकालने का यही तरीका आपका, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पूछा जा रहा है, जैसे मान लो किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, now for this normal distribution function, if you want to calculate the probability exactly at x equal to x1, not greater than, not less than, so at exactly x equal to x1, जब x का वैल्यू x1 के इक्वल होगा, so exactly at x equal to x1 what will becomes, at x equal to x1 area is what, area equal to 0. x इक्वल टू x1 पे एरिया कितना होगा सर आपका 0 एरिया होगा, क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट फंक्शन बन गया, ये ऐसा फंक्शन बन गया आपका सर, डिस्क्रीट फंक्शन बन गया। सर देखो ये मैराथन दौड़ है आपका, समझ आ रहा है ना, ये यूट्यूब सेशंस आपके जो भी है एक कुछ पॉइंट्स को लेकर के हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस जब होते हैं तो वहाँ पे टाइम आपको दिया जाता है नोट करने का, समझाने का, तो यहाँ पे यूट्यूब सेशंस है, यहाँ पे आपको सिर्फ सुनना है और समझना है, इसलिए मुझे कॉन्टिन्यूअस बोलते रहना पड़ रहा है ना। तो आपको कॉन्टिन्यूअस सर समझते चले जाना है चीजों को, लेकिन अगर आप YouTube सेशंस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे मुझे भी टाइम मिलता है, आपको भी टाइम मिलता है ना, अदर आप जो है रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं, और ऑफलाइन का खेल कुछ मजा ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ना देख पा रहा हूँ ना आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना, एक फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सर, है ना। सो आई होप आप लोग मजे लें, इंटरेस्ट लें थोड़ा सा सब्जेक्ट का, जो टफेस्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन का वही उठाएं आपको, है ना। सो यहाँ पर देखिए अगेन एरिया कितना हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है, वेरिएबल पूछ दिया जाएगा, आप पूछ दिया जाए सर x इक्वल टू x2 पे बताइए प्रोबेबिलिटी कितना 0, कितना 0, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी x2 टू x1 बताइए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको z2 निकालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको z1 निकालना पड़ेगा। z1 क्या हो जाएगा x1 माइनस ईटा x अपॉन
सिग्मा एक्स। Z2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस ईटा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, राइट। सो दिस इज योर Z2 एंड दिस इज योर Z1। ये हो जाएगा आपका Z2 और ये हो जाएगा आपका क्या, Z1, राइट। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, दिस इज x2 टू x1। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी सर x2 से x1 के बीच में, मतलब क्या होगा, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम x2 टू x1 दिस एरिया, this area. So in what way this area can be write? This is called Q function. So this is nothing but your Q of Z1, right? And X2 यहां से देखिएगा, यहां से इधर का एरिया क्या कहलाएगा, Q of Z2। कभी भी Q of Z फंक्शन लिखोगे ना, मतलब आगे की एरिया की बात करेंगे आप। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकाल देना है, या तो एक तरीका ये है x2 to x1 f of x into dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन में तो सर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो सर क्यू ऑफ फंक्शन में क्या लिखेंगे, देखिए ये टोटल एरिया कितना है, क्यू ऑफ जेड है, क्यू ऑफ जेड टू है ये टोटल एरिया, राइट। और ये जो एरिया है ये कितना है सर आपका, क्यू ऑफ जेड वन है सर आपका। मुझे चाहिए ये एरिया, मुझे ये एरिया चाहिए। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। सो इन व्हाट वे दिस एरिया कैन बी फाइंड, सो यू कैन राइट हियर area is equal to q of z2 minus q of z1। why this is q of z1, क्योंकि देखिए ध्यान से, यहां पर आप एरिया क्या लिखोगे, q of z2। सो q of z2 इज नथिंग बट टोटल। अगर इस टोटल एरिया में से अगर इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ऑब्वियस से वो क्या कहलाएगा आपका, q of z1। टोटल एरिया में से q of z1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यही कहलाएगा आपका क्या, प्रोबेबिलिटी। This is your probability. So this is your probability. यही आपका क्या है, probability, right? चलिए, so in this way we find the probability in this normal distribution function। सर एग्जैक्ट पॉइंट पे पूछा जाए तो एग्जैक्ट पॉइंट पे कितना होगा, वैल्यू इसका 0 होगा, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। Now what is the joint distribution function? ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम। इसी को बोलते हैं हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां पर आपका एक ही रैंडम वेरिएबल था x। अब यहां पर मोर देन वन रैंडम वेरिएबल, मान लिया दो रैंडम वेरिएबल्स हैं आपके x एंड y एंड व्हिच इज नथिंग बट योर इंडिपेंडेंट। सो हियर लेट्स से your two random variables and two random variables x and y and which is nothing but independent, and only when if f of xy is equal to f of x into f of y। so अगर आपका f of x into f of y इक्वल है, then this is called f of xy and this is called independent random variable। so यही आपका क्या है, independent random variable। now if f of x, यहां पर x नहीं था, अब xy है, इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी x लेस देन x एंड y लेस देन y। मतलब x की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसकी प्रोबेबिलिटी x से छोटा हो, स्मॉल x से, दिस इज सैंपल स्पेस। y की प्रोबेबिलिटी बताओ जो स्मॉल y से क्या हो, छोटा हो। सो इन दिस केस वी कैन राइट द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का अनदर पार्ट जो है वो क्या है आपका, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। So the marginal distribution functions is nothing but, here we find the CDF for the joint distribution function। जैसे सिंगल फंक्शंस का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉल्ड CDF, और जो CDF है वो f of x से रिलेट करते थे हम। यहां पर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के केस में हम क्या करेंगे, अगर
y को टेंस टू इंफिनिटी कर दें, जैसे मान लो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है ये एक्स वाई, अगर इसको हम y टेंस टू इंफिनिटी कर दिए देन दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स। अगर आपका x टेंस टू इंफिनिटी कर दिए देन दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ y। सो दिस इज योर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी को बोलेंगे हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना, जैसे वहां पर पीडीएफ था वैसे यहाँ पर है। सो दिस इज योर whenever f of x, this is p of x is nothing but joint probability। joint probability कैसे निकालेंगे, area of joint pdf, area of joint pdf is called joint probability और इसी को बोलेंगे हम joint probability mass function। सो probability का मैक्सिमम वैल्यू कितना सर आपका 1 होगा, ठीक है। चलिए अब आता है मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। So how we can find the PDF through your marginal PDF system, ध्यान से देखिएगा, जहां पर आपको f of x y ये आपको गिवन है, ठीक है। So you have to given here f of x y, this is nothing but joint PDF, इसको बोलते हैं हम joint PDF। सर अगर आपको joint PDF से ना, joint PDF से अगर आपको ओनली वन सिंगल वेरिएबल के PDF को निकालना हो देन हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मुझे चाहिए f ऑफ x चाहिए, तो ऑब्वियस है y के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलोगे सर क्यों करेंगे, चलिए क्यों करेंगे सर इंटीग्रेट, क्योंकि आपको चाहिए किसमें, x वेरिएबल में चाहिए, मतलब y आपका क्या है, कौन आपका जो है y के रिस्पेक्ट में फंक्शंस को निकाल दे, दिस इज नथिंग बट योर f of x एंड दिस इज द फार्मूला व्हेन विद रिस्पेक्ट टू y। सो अगर y के रिस्पेक्ट में अगर आपको चाहिए तो इस केस में फिर सेम, देखो ध्यान से, जो चाहिए उसके अपोजिट में इंटीग्रेट कर दो, याद रखने का तरीका, जो चाहिए इसके अपोजिट में इंटीग्रेट कर दो एंड दिस इज नथिंग बट योर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स PDF, इसी को बोलेंगे हम PDF। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, और यहीं से निकालेंगे हम मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, मॉड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मोमेंट निकालेंगे यहाँ पे, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन भी। आगे चल के इसी को आगे हम पढ़ाएंगे, इर्गोडिसिटी प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस के केस में भी देखेंगे हम लोग इर्गोडिसिटी का कंडीशंस क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड एवरेजेस कैसे निकालेंगे, और किसी भी रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस में किस तरह से हम रैंडम प्रोसेस के ऑटो कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, क्रॉस कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, एंड बिफोर स्टार्टिंग द स्टैटिस्टिकल एवरेजेज व्हाट इज डू मीन बाय द मोमेंट। सो व्हाट इज द मोमेंट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोमेंट, a statistical averages, this is given by the moment, this is given by the moment। मोमेंट अगर किसी भी फंक्शंस का निकाल रहे हैं आप, if you want to calculate the moment of your any functions then this will gives you statistical averages। क्या देगा ये आपका statistical averages देगा। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एवरेजेज वैल्यू को निकालना पड़ेगा आपको, राइट। सो द nth मोमेंट ऑफ द PDF is calculated as expectation of x to the power n, and this is equal to expectation of x to the power n। How we can calculate the expected value, so this is equal to minus infinity to infinity x to the power n f of x into dx।
This is called expectation of x to the power n, expected value of x to the power n, right? So this is nothing but nth moment, इसको बोलेंगे हम nth moment. This is called nth moment, right? सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीडियन, मीन वैल्यू। सर किसी भी फंक्शन का अगर nth मोमेंट निकालना है ना, जस्ट उस फंक्शंस को रखो, पीडीएफ से मल्टीप्लाई करो एंड देन इंटीग्रेट। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू, या इसी को बोलेंगे हम nth मोमेंट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीन वैल्यू? द फर्स्ट मोमेंट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। द फर्स्ट मोमेंट गिव्स द मीन वैल्यू। फर्स्ट मोमेंट क्या देगा सर? आपका मीन वैल्यू देगा, है ना? फर्स्ट मोमेंट मतलब n का वैल्यू कितना सर? आपका 1। So whenever put here n का वैल्यू 1, whenever n equal to 1, this gives you mean value। यही आपका क्या होगा? फर्स्ट मोमेंट। So this is expectation of x, this is equal to minus infinity to infinity x into f of x into dx, and this will gives you mean value। क्या देगा सर आपका? ये mean value, right? Now come to the second point। Now second moment, second moment gives the average power of the pdf। पीडीएफ का अगर आपको एवरेज पावर निकालना है, देन दिस इज योर सेकंड मोमेंट। या किसी भी फंक्शंस का अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एवरेज पावर, देन जस्ट कैलकुलेट द सेकंड मोमेंट। क्या निकालिए सर आप? सेकंड मोमेंट। सो द सेकंड मोमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इनटू f of x into dx, and this is called expectation of x square, and this will gives you second moment। क्या देगा सर आपका? ये second moment, and this is represented as m2 and this is represented as m1। first moment is m1, second moment is m2। now third portion is variance। now here define the variance। variance is nothing but sigma square, and this is equal to m2 minus m1 square, and this is expectation of x square minus expectation of x का square। this is called variance। इसी को बोलेंगे हम क्या? variance। so this is nothing but your variance, right? now come to the point, what represent this variance? so variance is nothing but represent AC पावर। सर कौन सा पावर रिप्रेजेंट करेगा? आपका AC पावर। सो वेरिएंस रिप्रेजेंट करता है आपका कौन सा सर? AC पावर को रिप्रेजेंट करेगा। सो वेरिएंस विल रिप्रेजेंट द AC पावर। ये AC पावर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपसे पूछा जाए इफ यू वांट टू कैलकुलेट द RMS वैल्यू, RMS वैल्यू, then RMS value is nothing but standard deviation, and this is equal to sigma, and this is equal to under root m2 minus m1 square। this is called RMS value। तो किसी भी फंक्शन का, किसी भी रैंडम वेरिएबल्स का पीडीएफ आपको गिवन है, एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द statistical averages, so the statistical averages calculate here, and by doing so we can find the various parameters, and these various parameters is nothing but the RMS value, AC power and DC power, and also you can find the average power। now come to the point, what is the DC power and how we can find the DC power of the signals? so to calculate the DC power, first of all you should find the first moment। if you have the first moment of that PDF, that is if you have the first moment, if you have the expected value of the x, that is nothing but your first moment, then by squaring the first moment, this will give the DC output।
This is nothing but your DC power. So the DC power is nothing but फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर. फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर जो है सर वो क्या देगा आपको, डीसी पावर देगा. तो दीज आर द स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजेज. नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू. लेट y इक्वल टू ax प्लस bz, या वी कैन से हियर z इक्वल टू ax प्लस by. Now you have to find the expected of z. So expectation of z is nothing but a times of expectation of x plus b times of expectation of y. This is nothing but expected value of your z. So this is your expected value of your z, right? Now come to the point. So this is your expected value. So here the expectation operation is linear, that is expectation of x plus y. You can write expectation of x plus expectation of y. It means अगर आपके x and y continuous random variables है, if your x and y is a continuous random variable, x and y is continuous random variable, ये आपके सर कैसा है, continuous random variables है. Then for this continuous random variable, the expectation of x plus y is equal to expectation of x plus expectation of y. Now expectation of what, the cx. So the expectation of cx is nothing but the c times of expectation of x. This is your expectation of x, right? Now come to the point, what is the moment. moment क्या होगा, तो moment अभी आपको मैंने पढ़ा दिया, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, है ना, वेरिएंस भी पढ़ा दिया अभी मैंने आपको. चलिए, व्हाट डू यू नो कोवेरिएंस. नाउ कम टू द पॉइंट, कोवेरिएंस, concept of covariance. Covariance, this is nothing but covariance of xy equal to sigma xy, and this is expectation of x minus eta x into expectation of y minus eta y. This is called covariance, where eta x is what, mean of x, eta y mean value of y. So this is your expectation of x minus eta x into y minus eta y. अगर आप इसको ब्रेक करें, if you want to break here, चलिए ब्रेक कीजिए, क्या बनेगा सर, expectation of xy minus expectation of x into eta y, या mu y लिखा हुआ है, mu y ले लो आप, minus mu x into expectation of y plus mu x into mu y. Right? Now come to the point. And this is expectation of xy. So this is expectation of xy minus, this can be right here, mu x into mu y minus mu x into इसका mu y plus mu x into mu y. खत्म. So यहाँ पर आपका आ गया covariance of xy, and this covariance of xy is nothing but expectation of xy minus mu x into mu y. This is nothing but your covariance of x and y. This is called covariance function. क्या बोलेंगे इसको हम, covariance function. अब ध्यान से देखिए, covariance मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बीच में रिलेशंस निकालना है. आगे आज चल के आपको पढ़ाया जाएगा ऑटो कोवेरियंस एंड कोवेरियंस, राइट. तो वही एक पार्ट था आपका यहाँ कोवेरियंस, जो आगे आपको पढ़ाएंगे. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या क्या है सर, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या होता है, देखो जैसे मान लो n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ध्यान से समझिएगा. इफ यू हैव n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास, तो फॉर n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए मान लिया, या ऐसे मत समझ लो आप, n नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ठीक है.
n नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है या n नंबर ऑफ आपके जो है सैंपल स्पेस या n नंबर ऑफ ट्रायल या बोल सकते हो n नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना, कोई भी चीज ले सकते हो आप। तो दिस इज n नंबर। अब इस n पॉसिबल्स के लिए जो एक आउटकम्स है, ओनली वन फंक्शन आउटकम्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लिया मैंने p। सो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी p है। तो ऑकर्स ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? q, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस p, राइट। सो फॉर द n number of trials having the probability occurs the k events, n नंबर के लिए k events होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज n c k p raised to power k 1 minus n minus k, and this is called nothing but your binomial distribution functions. This is your binomial functions. Now come to the point. So this is nck. nck is what? Just 1 minute. इसको मत हटाना। Now let's start. चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो ध्यान से, बाइनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे मान लो कि आपके टोटल 1 मिनट नहीं कर रहा था। अरे सबसे लड़के भाई तुम, हाँ मैं झारखंड से हूँ। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? क्यों आता है पॉइजन? देखो ध्यान से, जब आपके पास ऑलरेडी बाइनोमियल था तो पॉइजन क्यों आया? जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास था तो पॉइजन क्यों आया? क्या रीजन था पॉइजन आने का? उसका रीजन क्या था? देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी हम बात करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जब भी हम लेके चलेंगे, इस केसेस में सैंपल स्पेस बहुत लार्ज होंगे आपके। सैंपल स्पेस इज वेरी लार्ज, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल। अगर प्रोबेबिलिटी वेरी स्मॉल है, सैंपल स्पेस वेरी लार्ज है, इस केसेस में हम लोग इसको निकालेंगे किससे? कौन सा पैरामीटर से? पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम? पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल से निकालेंगे। सो द पॉइजन्स रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k e raised to power minus alpha, alpha to the power k upon factorial p, where alpha is what? n into p। अल्फा को बोलेंगे हम n times of p, so where alpha is n into p, this is nothing but आपका, इसको बोलेंगे हम मीन वैल्यू। तो दिस इज योर मीन वैल्यू। नाउ व्हाट इज द वेरिएंस? तो वेरिएंस क्या होगा आपका? वेरिएंस की बात जब भी हम करेंगे, वेरिएंस की बात जब भी हम कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर np times of q, np times of q, है ना, दिस इज योर वेरिएंस। सो np into q, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। सर q क्या होगा सर आपका? 1 minus p, q is nothing but 1 minus p, right? So the variance is equal to np into 1 minus p,
So this is np minus n times of p square, and this is nothing but your sigma square. This is called variance. Now come to the point. For the normal distribution function, this is your PDF, and this is the graph of your CDF. Already I have discussed here. Now this is the probabilities. Now come to the point, having the some questions related with these transforms, right? चलिए, अब मुझे इसका वेरिएंस निकालना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। कैसे निकालेंगे हम वेरिएंस को? सो इन व्हाट वे वी कैन फाइंड द वेरिएंस? सो वेरिएंस को हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मान लो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आपका, ठीक है। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए मुझे निकालना है, क्या निकालना है सर आपको? पीडीएफ। तो पीडीएफ तो आपको निकाल लिया, सीडीएफ निकाल लिया। मान लो आपका ये दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, अच्छा सा क्वेश्चन। ये आपका दिया सीडीएफ का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ सीडीएफ, राइट? This is 1, this is 0.8, this is 0.6, this is 0, this is 1, this is 2. Let's say this is 3. This is your PDF, right? अब इस PDF की अगर हम बात करें, PDF gives you probability. PDF डायरेक्टली आपका क्या देगा सर? probability देगा। So PDF directly gives you a probability. If it is your PDF, this is your CDF. Sorry, this is your CDF. CDF gives you a probability. If it is your PDF, then area of that PDF is CDF. Now, if you want to find the calculate the probability at x equal to 1, right? You have to find probability at x equal to 1. So the probability at x equal to 1 is not here equal to 0. If it is PDF, then probability of at x equal to 1 equal to what? 0. Why this is 0? Because x equal to 1 पे discrete function बन जाएगा, और discrete function का जो एरिया है वो एरिया कितना होता है आपका? 0 होता है। लेकिन अगर आपको दिया हुआ ये CDF का ग्राफ, तो CDF का ग्राफ के लिए at x equal to 1 पे जो प्रोबेबिलिटी होगा, एट x इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी होगा, तो कितना होगा सर इसमें? सडन चेंज। 1 पे देखो यहाँ पर कितना था सर? 0.6 था, और फिर से कितना हो गया आपका? 0.8 हो गया, नहीं? सो सडन चेंज देखना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी हियर x इक्वल टू 1 इज नथिंग बट 0.8 माइनस 0.6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.2। कितना होगा सर आपका? 0.2। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए एट x इक्वल टू कितना होगा? 1.5 पे बताइए प्रोबेबिलिटी कितना? सो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 पे बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दिस इज इक्वल टू 0.8, राइट? सो दिस इज 0.8 नॉट इक्वल टू 0। सो बी केयरफुल, 2 से 3 के बीच में कभी भी प्रोबेबिलिटी आपको पूछा जा रहा है, दिस इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट फ्रॉम 2 to 3, this is equal to 1. But in this case, not find the area because it is the graph of CDF, not the PDF. So that's the difference between your PDF and CDF. PDF और CDF का basic difference है, that's the basic difference. कि PDF के केस में हम एरिया उसका निकालेंगे तो मिलेगा आपको प्रोबेबिलिटी, और CDF के केस में डायरेक्टली आपका क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी बताएगा। Now come to the point. Whenever you go from 0 to 1, 0 से 1 के बीच में आपको अगर चाहिए, 0 से 1 के बीच में अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी, 0 से 1 के बीच में देखो क्या होगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपका फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। दिस इज नथिंग बट योर रैम। कैसा सर? आपका रैम। अगर 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ रखे है तो कैसा बनेगा?
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा इंटू कितना 0.6। अगर y इक्वल टू mx की बात करें, दिस इज 0.6, दिस इज 1, so this graph is nothing but f of x equal to 0.6 times of x. This is your CDF. This is your CDF. Now for this CDF, if you want to calculate at x equal to 0.5, अगर आपको चाहिए सर 0.5 पे चाहिए, तो सर 0.5 पे कितना होगा, तो पुट ईयर यहाँ पर पुट कीजिए आप 0.5 पुट कीजिए, you will get 0.6 into 0.5 and this is nothing but 0.03 period. This is our probability, right? So किसी भी पॉइंट्स पे अगर आपको probability पूछा जा रहा है and if you have the graph of CDF, then you can directly find the probability theory. यहाँ से आप probability को डायरेक्टली निकाल सकते हैं. So this is your PDF, concept of your PDF and concept of your CDF. PDF का कॉन्सेप्ट है सर ये, और CDF का कॉन्सेप्ट है. अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी बताइए एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 2 पे, सर 2 पे देखो यहाँ डिस्क्रीट चेंजेस हैं, 2 पे कितना चेंज है सर, तो दिस इज 1 माइनस 0.8, सो आंसर विल बी 0.2. यहाँ पर मत बोल देना कि 2 पे 0.8 है या 2 पे 1 है, दिस विल बी योर सडन चेंज, कितना आपका सडन चेंज, एंड दैट सडन चेंज विल रिप्रेजेंट योर CDF एंड दैट CDF इज नथिंग बट योर probability. इसी को बोलेंगे हम probability. Now come to the point. If x और y are independent, अगर x और y आपके कैसा है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है. If x और y are independent random variable, x और y कैसा है सर आपके इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है. So if your x and y are independent random variables, it means what? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो जब x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब what is the probability of occurring x which is nothing but independent from the y? So in that case, the expectation of xy can be right here, expectation of x into expectation of y. If x and y are orthogonal, कैसा है सर आपका orthogonal, then expectation of xy becomes 0 for this part orthogonal function. So if x and y are independent random variables, then expectation of xy is equal to expectation of x into expectation of y. If your x and y are orthogonal, then in that case expectation of xy equal to 0. इस केसेस के लिए expectation of xy क्या हो जाएगा आपका 0. Now variance, सर वेरिएंस को क्या लिखते हैं आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ईटा x का होल स्क्वायर. देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस ईटा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ईटा x इंटू expectation of x. So this is expectation of x square plus eta x square minus 2 into eta x square. So this is expectation of x square minus eta x square, and this is nothing but expectation of x minus eta x का whole square, and this is equal to expectation of x square minus first moment का square, right? इसलिए इसको बोलते हैं हम वेरिएंस को फार्मूला m2 minus m1 square. प्रूव कर दिया मैंने, है ना. दैट्स माय वेरिएंस इज कॉल्ड m2 minus m1 square. दिस इज नथिंग बट योर वेरिएंस, इसी को बोलेंगे हम वेरिएंस. नाउ कम टू द पॉइंट. लेट किसी भी फंक्शंस को किसी दूसरे पीडीएफ में अगर लिखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. y कैसा है सर आपका फंक्शन ऑफ x है सर, ठीक है. जैसे मान लो x क्या है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट. लेट्स से मीन वैल्यू इज 0, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मान लो ये आपका, एंड वेरिएंस कितना मान लिया मैंने 1. तो ये क्या होगा f ऑफ x 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई e raised to power minus x square. This is your f of x.
This is your f of x. So this is y is equal to function of x, and this is nothing but your variance sigma square, and this is equal to 1 upon under root 2 pi e raised to power minus x square. ठीक है, अब इस फंक्शंस का मुझे जो है निकालना है, तो क्या निकालना है, बोल दिया एक अनदर रैंडम वेरिएबल्स है, दैट इज y इज रिलेटेड टू 2x + 3, ऐसे दे दिया। समझ रहे पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? सर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x आपका जो है एक रैंडम वेरिएबल है, ध्यान से समझिएगा, x एक रैंडम वेरिएबल है और y भी एक रैंडम वेरिएबल है, बट y जो है x के साथ रिलेटेड है। कैसे? y इज योर फंक्शन ऑफ x, y इज योर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y कैसा है आपका फंक्शन ऑफ x है। देन व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y, क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर पीडीएफ ऑफ x ये है तो पीडीएफ ऑफ y बताइए क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। इफ यू हैव टू गिवन y is the function of x, and if you have the x which is nothing but your random variable, then how we can find the y in the function of x, that is pdf of y. How we can find the pdf of y? So to find the pdf of y, f of y is nothing but f of y को क्या लिखोगे आप, f of x upon dy by dx का मॉड वैल्यू, dy by dx का मॉड वैल्यू। सो f of y is equal to f of x upon dy by dx का कैसा सर, मॉड वैल्यू। सो द मॉडुलस वैल्यू ऑफ f of y, अब इसको निकालना है, where x is, यहां पर लिखेंगे where x is फंक्शन ऑफ y, x is फंक्शन ऑफ y। सर बताइए y इक्वल टू था 2x + 3, तो x क्या लिखोगे, y - 3/2। आप ध्यान से देखिए dy by dx क्या हो जाएगा सर, dy by dx इक्वल टू 2, राइट। सो f of y कितना हो जाएगा आपका बताइए, f of y इज 1 upon under root 2 pi e raised to power minus x square upon dy by dx is equal to 2. Now you can write here f of y is equal to 1 upon 2 under root 2 pi. This is x minus x square. So what is the x? So sir x is equal to y minus 3 divided by 2. Sir x कितना है आपका, y minus 3 divided by 2 है। So the f of y can be right here 1 upon 2 under root 2 pi e raised to power minus y minus 3 by cos square divided by 4, and this will be your pdf of y, this will be your pdf of y. So this is the relation of the pdf, and in that way we can modulate the pdf from one function to another function. So this is the modulation of the pdf from one function, that is we can say here the one random variable to your another random variables. So this is nothing but y is equal to function of x. y किसके फॉर्म में है सर, आपका फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आपके, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, you have to given x is your random variable, y is your another random variable, x is your random variable, y is your another random variable, and let z is equal to x plus minus y. सर लिनियरली आपकी जो है रिलेटेड है as z is equal to x plus minus y. Now in this case you have to given pdf of x, you have to given pdf of y. Now you have to find out the pdf of z. So in what way we can find the pdf of z? So sir pdf of z is nothing but f of x convolve with f of y. pdf of z निकालने के लिए क्या करेंगे सर, आप f of x को कन्वोल्यूशन करेंगे किसके साथ, f of y के साथ. So in that case f of x is convolved with f of
वाई, एक्स किसके साथ कन्वॉल्यूशन होगा, वाई के साथ कन्वॉल्यूशन होगा। एक्स का कन्वॉल्यूशन करेंगे हम किसके साथ, वाई के साथ कन्वॉल्यूशन करेंगे, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द कन्वॉल्यूशन? So this is, let's say, f of x star, this is f of y t minus star into theta, या another variable मान के चलना, that is nothing but f of z. So the PDF of, या तो z के फॉर्म में ले लो, जिसके फॉर्म में लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Now next question, next, if z is related to ax plus by, क्वेश्चन है, if your z is related to your ax plus by, where x is your what, random variable, y is also your what, random variable. So when x is related to, z is related to ax plus by, और ऐसा लिखे रहेगा z is related to x plus by, then if the variance of x is sigma x square and variance of y is sigma y square, then sigma z square is equal to 1. क्वेश्चन ये, सर x का वेरिएंस है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सर y का वेरिएंस है सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सर z का वेरिएंस क्या होगा? अगर z आपके रिलेटेड है किससे, ax प्लस by से रिलेटेड है, then what will be the variance of your z? So the variance of your z is nothing but a square, variance of z equal to what, a square sigma x square प्लस b स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। देखिए कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। इसको निकालने से पहले देखो ध्यान से, जैसे मान लो किसी भी इनपुट से, मान लो x ऑफ आपका है रैंडम वेरिएबल्स, which passes through a impulse function h of t, and you will get the output y of t. So this y of t nothing but x of t convolved with h of t. Now you have the eta x equal to mean value of x, mean value of किसका, x of t. So here the mean value of x of t is eta x, here the mean value of y of t कितना, eta y, right. Now h of t का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, मैंने मान लिया h of j ओमेगा. So here your Fourier transform h of t is nothing but h of j omega. So put here h of j j. क्या पुट करेंगे आप इसको, h of j j. Now जैसे आप h of j0 पुट करेंगे इसको, आप ओमेगा का वैल्यू j0 पुट कीजिए, then eta y your becomes h of 0 into eta x. This is your mean value of the output. Now come to the point. इसे मुझे प्रूव करना है, सिग्मा जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, राइट। चलिए इसको निकालना है सर मुझे, है ना। चलो now come to the point. Its mean value is what, eta x. Its mean value is what, eta y. ठीक है, चलिए। So z equal to ax plus by. So the expectation of z equal to a times of expectation of x plus b times of expectation of y. So this expectation of z is called eta z. This is a times of eta x plus b times of eta y. So eta z is nothing but a times of eta x
plus b times of eta y. This is nothing but your eta z, mean value. This is mean value of the z. Now variance sigma z square equal to expectation of z square minus expectation of z ka square. This is your variance of z. So the sigma z square can be right here expectation of ax plus by ka square minus expectation of ax plus by, right? And you can say here इसको आप बता दीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर, इसको लिखिए ऐसे सिग्मा जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ax plus by का स्क्वायर माइनस थीटा जेड का स्क्वायर. So this is a square expectation of x square plus b square expectation of y square plus 2ab expectation of x into expectation of y minus eta z square. This is ax plus by का whole square. So this can be right here expectation of this is a square expectation of x square plus b square expectation of y square plus 2ab expectation of x into expectation of y minus इसको लिख सकते हैं a square x square plus b square y square plus 2ab x into y. इसका क्या एक्सपेक्टेशन है ना, इसका क्या एक्सपेक्टेशन. तो ये क्या बन जाएगा सर आपका, देखो यहाँ पर आप बैक ले लीजिए, क्या था ये ax प्लस बी वाई था, ईटा जेड का स्क्वायर नहीं ax प्लस बी वाई, इसको आप खत्म कीजिए, ये बन जाएगा ax ईटा x प्लस b ईटा y का होल स्क्वायर. So this is your a square expectation of x square plus b square expectation of y square plus 2ab eta x into eta y minus a square eta x square minus b square eta y square minus 2ab eta x into eta y. This is the cancel out. This becomes a square expectation of x square minus eta x square plus b square expectation of y square minus eta y square, and this is your sigma z square. So now this is called sigma x square and this is called sigma y square. So the expectation of z square, this is nothing but sigma z square, can be right here a square into sigma x square plus b square into sigma y square. So sigma z square is a square plus sigma x square plus b square into sigma y square, and that is nothing but your variance of z. This is variance of z. So this is nothing but your variance of z. Is it clear? I think clear होगा आपको, ठीक है. चलिए. So in this way we can find the various possible parameter. Now come to the next point. Now these are the questions which I am going to discuss here. The question is a probability density function is of the form of k e raised to power minus mod of x. कह रहा है find the value of the k. k की वैल्यू बताइए क्या होगा. So this is nothing but your k e raised to power minus alpha mod of x from minus infinity to infinity into dx equal to 1. So you can write here k into, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, this becomes 2 alpha upon alpha plus omega square and put here omega equal to 0. फूरियर ट्रांसफॉर्म से इसको सॉल्व कर दिए, शॉर्टकट मेथड, इक्वल टू 1. दिस इज k
2 upon alpha equal to 1. So k is alpha by 2 and your answer will be nothing but 0.5 alpha. Right? Now come to the second question. Second question क्या है आपका? Again, what is the relation? So PDF वाला relation लाएंगे. There are m e raised to power minus 2 mod of x plus n e raised to power minus 3 mod of x. Right? Is the probability density function for the real random variable x. Therefore, these entries axis m and n are both positive and real numbers. The quotient equation relating with m and n is what? This one minus infinity to infinity m e raised to power minus 2 mod of x plus n e raised to power minus 3 mod of x into dx is equal to 1. Right? So you can write here m into माइनस इंफिनिटी टू जीरो एक्स नेगेटिव लोगे तो e रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 2x into dx प्लस 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस 2x into dx ये आ गया पहले है ना प्लस n का वैल्यू लोगे तो क्या होगा माइनस इंफिनिटी टू जीरो e रेज़ टू पावर 3x into dx प्लस 0 से इंफिनिटी के बीच में लोगे तो क्या होगा e रेज़ टू पावर माइनस 3x into dx एंड दिस इज इक्वल टू कितना 1. जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कीजिए. दिस विल बिकम्स m, दिस इज नथिंग बट 1/2, दिस इज आल्सो 1/2, राइट. दिस इज 1/2 प्लस n, this becomes 1/3 plus n, this is 1/3 equal to 1. So m plus 2n/3 equal to 1. So option A is the correct option. So your option A is your correct option. ठीक है. तो इस तरह से निकाल सकते हैं. वेरियस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको आप कर सकते हैं सर, है ना. चलिए now come to the next question. Next question again this is nothing but from the CDF. इसकी बात कर रहे हैं हम CDF. कराइए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है आपका जिसका f of x आपको दिया हुआ पीडीएफ दिया हुआ आपको सर. ये ऐसे लिखना चाहिए. पीडीएफ आपका ये होगा f of x स्मॉल से पीडीएफ स्मॉल से डिनोट करते हैं a e raised to power minus b mod of x. x क्या है क्या रैंडम वेरिएबल है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कर रहा है. तो सीडीएफ ऑफ द फंक्शन ऑफ x क्या होगा सर. सीडीएफ क्या होगा f of x इक्वल टू दिस इज नथिंग बट x ग्रेटर देन 0 के लिए बोल रहा है मतलब 0 टू x a into e raised to power minus b mod of x into dx. This is your CDF. So just integrate. This is x is from 0 to a. X this is a e raised to power minus b mod of x upon minus b. This is nothing but your 0 to x. So this is a by b. A by b 0 पर रख लीजिए. This is 1 minus e raised to power minus b mod of x. This is your graph, right? x क्या होगा पॉजिटिव होगा. यहाँ पर mod of x लेके हम चलेंगे. तो दिस इज a by b 1 minus e raised to power minus bx. इसका यही होगा आपका क्या CDF. दिस इज नथिंग बट योर CDF. ये क्वेश्चन आपका जो है गलत आया था 2017 में, है ना. ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग आए थे. कोई भी ऑप्शन आपके मिल नहीं रहे थे सर, है ना. दैट नथिंग बट योर रॉन्ग ऑप्शंस. आंसर विल बी दिस. ठीक है. चलिए now come to the next question. कह रहा है क्वेश्चन में द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है f of x of a random variable x which is shown in the figure. कह रहा है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1. अभी मैंने करवाया आपको कि अगर आपको CDF गिवन है, if you have to given this value of CDF not the PDF. If you have given the CDF then just make the discrete changes. So at p equal to x equal to 1, the discrete change is nothing but 0.55 minus 0.25 and this is equal to 0.3. So your answer will be 0.3. Basic question जो आपको already मैं पढ़ा चुका हूँ. These are the basic questions. Now come to the next. कर आपका इस PDF का बताइए CDF क्या होगा. देखो PDF always positive.
and CDF always non decreasing value, नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या, ऑलवेज क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा सर, ध्यान रखेंगे आप। अगर आपको कभी भी निकालना हो पीडीएफ से, आपको सीडीएफ निकालना हो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सीडीएफ फ्रॉम द पीडीएफ, सीडीएफ से आपको क्या चाहिए सर, पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या कीजिए, उस फंक्शन को जस्ट उठाओ और इस फंक्शन को लेकर के साथ में ही उसको इंटीग्रेट कर दो, and your integration output will be your CDF. So this should be non-decreasing. This should be your non-decreasing, है ना। तो ये पॉसिबल है नहीं डिस्क्रीट फंक्शन, क्योंकि दो ट्रायंगल फंक्शन को करोगे पैराबोलिक फंक्शन आएगा। यहाँ पर देखो ये ऐसा गया, फिर ये इंक्रीज ऊपर चला जा रहा है, ये सीधा गया, फिर ये हो गया वन, ट्रायंगुलर फंक्शन तो होगा ही नहीं। दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो योर ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। अभी मैंने बताया आपको मीन मतलब क्या होता है, आपका मीन का मतलब फर्स्ट मोमेंट, मीन मतलब फर्स्ट मोमेंट। सो योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ईयर, फर्स्ट मोमेंट कभी भी आपको निकालना हो, whenever you want to find the first moment, just integrate -1 to 3. What is the PDF here? This is 1/4. So just 1/4 into dx, and this is equal to 1/4 into 4, and this is equal to 1. So your mean value is equal to 1. So option B and C is the possible options. A or D तो हो ही नहीं सकता, right? Now come to the variance. So first of all, we should find the second moment. So the second moment is nothing but -1/3, 1/4 into x square into dx. Now if you want to calculate here, this becomes 1/4 into, this is x cube by 3, and this is nothing but -1 to 3. So this is 1/3, and this is 9, right? And this is plus 1/3, right? Because this is 27/3, so this is 27, and this is minus, and minus becomes plus, so this is your 28/3. So 1/4 into 28/3, so this is nothing but 7/3, right? Now variance is what? Variance is nothing but m2 minus m1 square. So second moment is what? 7/3, m1 square is 1, this is equal to 4/3. So option B is your correct option, C is your wrong options, right? So your right answer is nothing but your B. So B is your right answer. Now come to the next question. Now the question is, the output of a communication channel is random variable V with the probability density function is shown in the figure. The mean square value of V is, what is the mean square value? Mean square of value. Mean square value is nothing but root mean square value is nothing but your sigma. Mean square value is nothing but sigma. So first of all, you should find the sigma square. It's in m2 minus m1 square. So before finding the sigma square, first of all, you should calculate the value of k. So how you can calculate the value of k? So for calculation of the value of k, just area should be equal to 1, right? So this is half into base into height should be equal to 1. So k equal to 1/2. So k is your 1/2. Now the PDF is 1. If you want to PDF, then what is the maximum value of this? This is 1/4. Now this is the f of PV. PV is what? PDF is what? 1/4, 1/2. This is 1/2. 1/2 into 4. This is nothing but your PV. So PV is equal to 1/8 into V. Right? This is your PV. Now we have to find the second moment, first moment. So first moment is the expectation of V. So this is minus infinity to infinity. This is nothing but 0 to 4. 1/8 into V into V into dV. So this is 1/8 into VQ by 3. This is 0 to 4. This is 1/8 into 1/3. This is 4 into 4 into 4. This is nothing but 2. This is 8/3. Right? This is 8/3. Now second moment.
second moment expectation of v square, this is 1 by 8 into v cube. So v cube, this is v4 by 4, this is 0 to 1 by, this is 0 to 4. So this is 1 by 8 into 4, this is 4 into 4 into 4 into 4. 4 से 4 cancel out हो गया, 4 2 2 2, this is nothing but 8. This is equal to 8. Now 8 minus 64 by 9, 8 minus 64 by 9. So 9 and 64 and this is equal to 8 by 9. So your variance equal to 8 by 9. So अगर आपको सेकंड मोमेंट की बात किया जाए, then second moment is nothing but 8. So mean square value, this is nothing but second power, second moment, and second moment का जो power है, this is nothing but equal to your 8 by 8. So this is equal to 8. So mean square value की बात कर रहा है, mean square value of v, which means second moment की बात कर रहे हैं हम, and second moment से ही हम क्या निकालते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं. यहाँ पर सर हम बाइंड अप करते हैं चीजों को. यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश ये किया, जो फर्स्ट मोमेंट है, ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर है वो देगा आपको डीसी पावर, जो सेकंड मोमेंट है ये देगा आपको एवरेज पावर, और जो सिग्मा स्क्वायर है ये देगा आपको एसी पावर, या इसी को बोलते हैं हम आरएमएस पावर भी. दिस इज कॉल्ड आरएमएस पावर. एंड अगर आपका आरएमएस वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, then this is nothing but your sigma. So RMS value is nothing but your sigma, right? So here, यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया है आपको, क्या क्या डिस्कस किया सर आपसे, PDF and CDF and what is the mean value. यहाँ से हम लोग देख लीजिए mean value आपका क्या है, एवरेज पावर क्या है आपका, है ना, RMS पावर क्या है आपका, इन सारे मुद्दों पे अभी हम चर्चा किए. नेक्स्ट जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए सर रैंडम प्रोसेस. तो रैंडम वेरिएबल से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको पीडीएफ और सीडीएफ, एक चीज का आप सर हमेशा ध्यान रखेंगे, पीडीएफ कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं देता है डायरेक्टली, एरिया ऑफ पीडीएफ जो है वो देता है प्रोबेबिलिटी. दूसरा चीज आप ध्यान में रखेंगे, एरिया ऑफ पीडीएफ को बोलते हैं हम सीडीएफ, एंड जो सीडीएफ होता है वो देता है प्रोबेबिलिटी. सीडीएफ क्या होता है, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, कभी भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन में नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग रहेगा हमेशा, है ना. इसलिए सीडीएफ जो होगा हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होगी. नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट योर सीडीएफ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बाइंड अप करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है. एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और एंजॉय कीजिए एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए. आप आपके गेट एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फरवरी में होने वाले हैं. अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए सर. मेक श्योर जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी सर. थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप रखिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का. सो डू वेल, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन को बनाइए एंड जुड़े रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए. और गेट फोरम जो भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज में एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं. वो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं और डायरेक्टली आई थिंक वो हिट करेगा आपका एग्जाम हॉल में. और मोस्टली जो है गेट फोरम हमेशा जो है क्वेश्चन को हिट करवाया है. इस बार भी कोशिश रहेगा कि आप सबके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को हिट करवा पाऊं और अच्छे तरीके से आपके जो है रिजल्ट आ पाए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्यार बनाए रखें और लगे रहें. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.